Hi my loves, what's up and welcome to my channel Beauty Edit by Amy. I know I have not uploaded video in like a long time. I think it's approx 2 to 3 months I haven't uploaded a video. But now I came back and I'll make sure I'll upload all my videos consistently. Let's hope for the best. So today's video is again a bomb new launch from Nykaa Cosmetics and uska naam hi Butter Bomb hai. So yeah, without wasting much time, let's get into the video and I will directly start with the swatches, and meanwhile I'll explain you everything about the product with pros, cons and the review. And if you find my videos helpful and relatable, then please don't forget to hit the subscribe button down there, because I see most of you people, 98-95% of people, you see videos but you don't subscribe. Guys, it's free and it will help me to grow on YouTube. So please subscribe to my channel. So as you guys already know, पेप्टाइड लिप बाम एंड पेप्टाइड लिप टिंट का ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में. रोड लिप टिंट एंड मैनी अदर ब्रांड्स, कृति सन का हाइफिन, बहुत सारे ब्रांड्स लेके आ रहे हैं ऐसे पेप्टाइड लिप टिंट लिप बाम. एंड सो नायका इज़ इन द मार्केट. ऐसा हो ही नहीं सकता कि नायका ने ये प्रोडक्ट नहीं लेके आए. सो येस, वी हैव हियर न्यू नायका बटर बॉम टिंटेड पेप्टाइड लिप बाम. This is the first shade, Pookie. It's a peachy nude shade and smells like a vanilla caramel. So this one is a skincare infused lip balm. It comes under the category of skincare infused makeup, and it has some good ingredients like peptides, squalene, kokum butter, shea butter, jojoba oil. Peptide helps to heal and increase the collagen production. Squalene ingredient nourishes your skin, lips and make it look like fuller. Kokum butter helps in reducing pigmentation. Shea butter reduces dryness and makes your lips hydrated. Jojoba oil locks in the moisture by creating protective layer. So the second shade is mine and it looks like a nude mauve shade and smells like orangey, fruity, berry kind of a smell. Amazing. Also, these lip balms are completely cruelty free, vegan, paraben free and mineral oil free, and these are super moisturizing, guys. If you ask me about my review, I absolutely love this product. I absolutely love all these 6 shades with me right here. Just for your information, these are like just new launch. मतलब अभी I think ये 2-3 दिन पहले ही आए हैं. Currently this Nykaa Pink Friday sale going on, and उसके around ही उन्होंने इसको launch किया है. And as soon as I saw, I got them. The third shade is Baby Girl and it's a beautiful brown nude on me, but I think it will look more of a peachy nude on deeper skin tones, and it exactly smells like a milk chocolate. Amazing. So this is not a PR package, or I haven't received these in PR. I have purchased all 6 shades for you guys, so I was just pretty much sure about this product. ये बहुत अच्छा होगा. So मैंने 6 के 6 shades ले लिए just to make a review for you guys. Yeah, I love these 6 shades, but I will tell you some pros and cons about it. Cons नहीं है, almost ना के बराबर है, but still मैं आपको इसके 1-2 छोटे-छोटे hit and miss बता देती हूँ. This is the 4th shade, Sweet Pea, and it's a bright red kind of a shade, and surprisingly there's no smell to it. I don't know, if I take it like 3-4 times तो मुझे थोड़ा सा sweet strawberry kind of a smell आ रहा है. मुझे strawberry cherry kind of a smell, but it's next to nil. So first thing first, इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है. मुझे ये लिप बाम से ज़्यादा ना वो लिप प्लम्पर होता है ना, जैसे मैरीकूजा का या शी ग्लैम का लिप प्लम्पर है. दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला. आई थिंक एल्फ ऑल्सो हैज़ द सेम फॉर्मूला, बस एल्फ के जो लिप टिंट और जो भी वो लिप बाम है दैट इज़ मोर पिगमेंटेड देन दिस वन. दिस वन हैज़ अ बिल्डेबल पिगमेंट, मतलब बिल्डेबल कवरेज, बिल्डेबल पिगमेंट. This is the 5th shade, Bub, and it's a beautiful pinky magenta kind of a shade. It smells exactly like the 2nd shade, that is mine. It has a fruity berry kind of a fragrance. जब आप सिंगल लेयर लगाओगे तो आपको एक छोटा सा सटल टेंट देगा. आप 2-3 बार उसको लगाओगे, रगड़ोगे आपकी लिप्स पे तो आपको प्रॉपर टेंट देगा लाइक अ लिप ग्लॉस. या आई लव द फॉर्मूला, आई लव द पिगमेंटेशन, एंड दिस डज नॉट लुक लाइक लिप बाम गाइस. दिस लुक्स लाइक अ लिप ग्लॉस. It's like a non-sticky lip gloss. This is the 6th and last shade, Love Bug, and apparently the most pigmented shade. It has a more like
cool tone red or reddish maroon kind of an undertone. This one you can build it up and accordingly इसका pigmentation change होता जाएगा. So if you apply it slightly, it will look like a light red. If you build it up like 2-3 times आपने apply किया तो ये थोड़ा सा maroonish red दिखने लगेगा. And it has a fruity fragrance, not exactly strawberry or berry, but it's a mixed fruity kind of fragrance. And to be very honest about this formula, it feels very nourishing, very moisturizing. और एक फेंटी का अभी जो नया निकला है ना, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल, बट उस टाइप का फॉर्मूला मुझे लगा. इट्स कम्प्लीटली नॉन स्टिकी एंड इट्स वेरी लाइट वेट. लिप ग्लॉस का भी क्या होता है ना, व्हेन यू अप्लाई आपको थोड़ा सा थिकनेस तो भी लिप ग्लॉस में लगता है. दिस वन इज एब्सोल्युटली लाइट वेट फॉर्मूला and this is actually what I look for when it comes to glossy lips. It gives a very nice glossy finish. So obviously it's a butter balm. उन्होंने बोला ही उसके नाम में butter balm है. It makes your lip glossy. So अब obviously this is not going to be transfer proof, guys. It does transfer. It will leave like a subtle tint on your lips. आपके लिप से थोड़े टाइम बाद ये completely vanish हो जाएगा. The staying power is around good 4 to 5 hours. And even when the color wears off, कुछ जो इसमें जो deep dark shades है, इसका थोड़ा सा एक tint आपके lips पे रह जाएगा. Otherwise जो थोड़े light shade है, I think this one Pookie and there's one more shade Baby Girl. I think ये दोनों shade के tints चले जाएंगे, but बाकी जो 4 shades है उनके tint definitely आपके lips पे रहेंगे. Then let's talk about the product quantity and whether it justifies the pricing. The product quantity is only 2 ml and I think it's 1.8 gram जो इनके tube पे लिखा हुआ है. It's 1.8 gram. And I somehow feel it's slightly costlier because इसका retail price है 649 rupees. So 2 ml or 1.8 gram का product for 649 is definitely not affordable. I understand they give a very nice quality. There's no compromise in quality. I understand. But मतलब अगर आप इसको Elf and Maripuja and Sheila इसके lip plumper से आप इसको compare करोगे, then this is the best price and budget you will get. But if you compare with Swiss Beauty, MAC and other those lip tint, then थोड़ा सा आपको ये costly लगेगा. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो क्वालिटी है ये वो फॉरेन ब्रांड के जो लिप प्लम्पर्स है, लिप ग्लॉस है, लिप टिंट है, उसके बराबर की ये क्वालिटी है. दिस इज़ नॉट द इंडियन ब्रांड क्वालिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई यूज लॉट ऑफ प्रोडक्ट. मैं ये नहीं बोलूँ कि स्विस ब्यूटी, मास एंड ऑल ये सब प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, उनके भी अच्छे हैं, बट दिस लुक्स लाइक एंड दिस फील्स लाइक अ लक्स प्रोडक्ट. Then if you ask me whether these will suitable to Indian skin or not, definitely it will. Only these 2 shades, the Pookie and Baby Girl, these are more of a nude and light nude kind of a shade. तो आपको इसको lip liner के साथ अगर आप इसको लगाओगे तो आपके lips पे और अच्छा दिखेगा. And rest 4 shades are quite well pigmented. उसमें भी अगर आप avoid करना चाहते हो repetition of shades, तो मैं आपको बताती हूँ एक Sweet Pea and Love Bug. ये दोनों जो शेड्स है ना, ये ऐसे तो मतलब अलग अलग दिख रहा है, बट मोर और लेस ये दोनों रेड काइंड ऑफ पिगमेंट देते हैं. सो यू कैन चूज एनी ऑफ दीज शेड्स. अगर आप इसको भी ऐसे 1 स्वाइप में लगाओगे तो आपको डेफिनेटली ये कलर ही मिलने वाला है. इसको आप अगर 2-3-4 बार लगाओगे तो आपको ऐसा ही कलर मिलने वाला है. तो दीज आर काइंड ऑफ सिमिलर शेड्स. एंड इफ यू आस्क अबाउट माई फेवरेट वंस, वैसे तो मुझे सारे ही पसंद आए हैं, बट माई मोस्ट फेवरेट वंस आर Mind, Bob and Pookie. I love these. Red shades मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है. Then only one thing I feel is a bummer is because अभी maybe मैं बहुत बार swatch कर रही हूँ इसको. I think मैंने पहले विदाउट मेकअप swatch करे और भी इसके साथ swatch करे हैं, तो मैंने 12 बार इसको लगाया है. तो थोड़ा सा when I'm swallowing it ना, तो थोड़ा सा जो प्रोडक्ट अंदर जा रहा है, तो I slightly feel bitter. I don't know it is because of this or something else, but थोड़ा सा मुझे bitter sensation, bitter feeling यहाँ पे taste आ रहा है. So that is a one bummer. Maybe if you apply it like once in a day or twice in a day, तो आपको लगेगा भी नहीं. And the second one is obviously I told you the price point. It is slightly on higher side, but to the quality they have given, it's totally justified. But still, if you would like to buy all shades or couple of shades, 2-3 shades, then I would suggest you to buy on discount. Now coming to my final verdict, whether I will buy these or not. Obviously yes, whether they send me on PR or not, I will buy these shades again because I love the quality, I love the pigmentation and I love everything about this product. I would highly recommend you guys, अगर आप बजट में या कोई इंडियन ब्रांड में कुछ इंटरनेशनल क्वालिटी देख रहे हो, then these are the ones you need to get. So yeah, this is amazing for upcoming winters and I highly recommend you guys to buy it. And yeah, that's all for today's video. Thank you for watching till the end. If you like my video and swatches, then please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel, and I shall see you super soon in my next new launch video. Till then, watch my other videos. Take care and
Bye.